हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से कोच मिनिस्टर में। इन द प्रीवियस वीडियो वी गेव यू एन ओवरव्यू अबाउट द नीट पीजी एग्जामिनेशन. If you haven't checked that out, please do. The link is in the description. And in today's video, we're going to dive deeper into the exam structure of the NEET PG examination and also provide you with some essential resources that will make your preparation easier. So without further ado, let's start. The NEET PG syllabus can broadly be divided into three categories: preclinical, paraclinical, and clinical subjects. Let's start with preclinical subjects. Preclinical subjects include anatomy, physiology, and biochemistry. These subjects are the building blocks of medical science, and a strong grasp here is crucial for your preparation. So let me share some important resources that will help you manage your time efficiently and also help you with your study plan. For anatomy, key textbooks include B.D. Chaurasia's Human Anatomy and Gray's Anatomy. Online lectures from Dr. Najeeb Lectures and Kenhub can prove to be very helpful, while apps like Complete Anatomy and Visual Body provide interactive learning experiences. For physiology, essential books are Guton and Hall textbook of Medical Physiology and Ganon's Review of Medical Physiology. For app-based learning, Teach Me Physiology and Human Anatomy Atlas are highly recommended. For biochemistry, Harper's Illustrated Biochemistry and Lippincott Illustrated Review are go-to books. Online platforms such as Lecturio and Professor Dave Explains offer comprehensive video lectures, and additionally apps like Medscape and Clinical Biochemistry offer quick access to information and clinical tools for students. Preclinical subject holds 17 to 20% of the total question in the NEET PG examination. Make sure to use these resources to solidify your foundation. Now let's move on to paraclinical subjects, which include pathology, pharmacology, microbiology, forensic medicine, and social and preventive medicine. These subjects bridge the gap between basic sciences and clinical aspect of medicine. Here are some valuable resources that will help you excel. In pathology, Robinson Cotton Pathologic Basis of Disease and Dr. Mohan Textbook of Pathology are crucial books. Online platforms such as Pathoma and Dr. Sattav's lecture offer valuable video content, and apps like PathX and Pathopic offer interactive learning tools. ओके, होल्ड ऑन अ सेकेंड। ऐसे तो मैं जानता हूँ कि आप सब बहुत स्मार्ट हैं, पर फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी टूल्स हम मेंशन कर रहे हैं, जो भी बुक्स हम मेंशन कर रहे हैं, जो भी ऐप्स हम मेंशन कर रहे हैं, इसका आप एक बार नोट बना लें, ताकि बार बार आपको वीडियो को पीछे ना करना पड़े और पॉज ना करना पड़े, और एक बार ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप सारे टूल्स, सारे ऐप्स और सारी बुक्स का पूरा फायदा उठा सकें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कर दीजिए इसे लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हम ऐसे ही कॉन्टेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। तो ये हो गई एक जनरल इन्फॉर्मेशन, और अब अपने टॉपिक्स पे वापस आते हैं और अपना बाकी का डिस्कशन शुरू करते हैं। फॉर फार्माकोलॉजी, की टेक्स्ट बुक इंक्लूड गॉडमैन एंड गिलमैन द फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक्स एंड केडी त्रिपाठीज एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी. Online platforms such as Lecturio offer valuable video content, and apps like Medscape and Hippocrates are interactive learning tools for students. For microbiology, students should consider Zwetz-Melnick and Edelberg's Microbiology and Anant Narayan and Paniker's Textbook of Medical Biology. Online platforms such as Sketchy Micro offer valuable video content, and apps like Microbiology Flashcard are perfect for revision. For forensic medicine, key textbooks include Reddy's Essential of Forensic Medicine. Online platforms such as Let's Crack NEET PG offer valuable video content, and apps like Forensic Medicine Q&A and Legal Medicine offer practical learning aids. For social and preventive medicine, Park's Textbook of Preventive and Social Medicine and K. Park's Essential of Community Health Nursing are essential textbooks. Apart from this, online resources include various YouTube channels focused on public health and WHO website. Apps like SPM flashcards are invaluable for students. Paraclinical subjects hold 25 to 30% of the NEET PG examination. Make sure to utilize these resources to excel in this examination.
तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, पर हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी ही वापस आएंगे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को और अच्छे से समझेंगे एग्जाम स्ट्रक्चर को और नीट पीजी एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। टिल देन सी यू, बाय बाय।